Yeah. So, welcome everyone. This is the first episode of Artha-Samvaad Podcast, and we have Hasmit Chugh sir with us. He is from Amritsar. At the age of he has at the age of 36. He's also into the manufacturing of textiles, into the business of textiles, and is also an investor, a Technofunda Investors by the name of his Twitter handle. So, welcome here, sir. Hi Jay, thanks a lot. Thank you. Thanks for this kind introduction. और like I said before, I am not this worthy कि मतलब मैं कुछ आपके साथ बात करूं. You're a prodigy, you're a genius. But yes, thanks for the kind introduction. और I am fairly new to investing, 2019, but I am very happy कि आपका जो ये संवाद शुरू हो रहा है. I'm the first participant. I'm just very happy to be here. I'm honored. Honestly, I'm honored. Thanks a lot for inviting me. We are honored, sir, to have you here. So the Thank you first so much. question, so my first question is, sir, why do you prefer Technofunda investing style, as your Twitter handle Yes, suggested? yes, that's a very good question. देखिए मेरी नजर में, if you ask me, a technical guy, a trader will always talk about trading. A Correct, value investor will always talk about valuations. He'll always talk correct, about the fundamental things of the thing. correct, अगर आप मेरे से पूछें इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो एक इतना अच्छा फ्रेमवर्क बन सकता है जो कि अनबीटेबल है. इफ यू आस्क मी, इट इज अ वेरी वेरी गुड कॉम्बिनेशन. मेरी बात से शायद प्योरली ट्रेडर्स को अच्छी नहीं लगेगी और प्योरली फंडामेंटल एनालिसिस वालों को अच्छी नहीं लगेगी. correct. द फैक्ट इज अगर अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए तो इट कैन गिव यू अ वेरी वेरी गुड इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क फॉर द लॉन्ग टर्म. सो व्हाट वी डू इज बेसिकली, जैसे मैंने एक या दो दिन पहले ट्वीट भी किया था, क्या खरीदना है ये फंडामेंटल्स बताते हैं और क्या कब लेना है ये आपको टेक्निकल चार्ट्स बताते हैं. सो आई गिव यू अ स्मॉल एग्जांपल. Laurus Labs. Laurus Labs was a high quality business since the day it was, since the day it was listed. It was a high quality business. Correct. But the fact is कि आपकी रिटर्न एज अ शेयर होल्डर बननी शुरू हुई 2020 के बाद, when the stock started moving up, right? If you held Laurus Labs from 2016 to 2019, let's say, आपकी returns minimal थी. It was a range bound stock. It was a very good stock, fundamentally very sound stock to hold, high quality business. लेकिन उसको होल्ड करने से 3 साल आपकी रिटर्न्स कुछ बेटर या कुछ बहुत अच्छी नहीं थी. उसकी रियल रिटर्न्स कब शुरू हुई? 2020 के बाद. I think May 2020 was on the charts, on the technical charts, जो उसका breakout आया था technical. उसके बाद से Laurus has not looked back. तो some people, कुछ लोग earnings में वो trigger और वो change देखते हैं. जैसे मैंने पीछे तारिक हुसैन जी का एक webinar देखा था SOIC पे. He spotted a spurt in the earnings of Laurus Labs और उन्होंने तब invest किया था. एंड वी डू इट ऑन द चार्ट्स. हमें लगता है कि एक रेंज बाउंड स्टॉक जब एक रेंज से बाहर आता है, दैट इज अ वेरी गुड टाइम टू इन्वेस्ट, एंड दैट गिव्स यू अ वेरी large runway ahead of it. So this is the basic reason for Technofunda analysis. You combine the fundamentals with the technicals. What to buy, fundamentals will tell you. When to buy, ये आपको technical charts बताए. तो बेसिकली जब एक रेंज बाउंड स्टॉक होता है, जब वो ब्रेकआउट देने को आता है, तब उसमें टेक्निकल एनालिसिस पर्सपेक्टिव से इन्वेस्ट करना चाहिए. एग्जैक्टली फ्रॉम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू. करेक्ट. और फंडामेंटल जब अच्छे होंगे तो फिर आप टेक्निकल्स पे देखेंगे कि कब खरीद सकते हैं इसमें. See, shortlisting of stocks will always be done by fundamental analysis. Got it. Yeah, shortlisting हमेशा उससे होगी, but कब खरीदना चाहिए उसको, that is always that's the technical part. That is the technical part. तो आप फंडामेंटल्स में कौन से क्राइटेरिया यूज करते हो कि इतना ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए, इतना आरओसी होना चाहिए, और टेक्निकल्स में कौन सा आरएसआई, एडीएक्स, व्हिच इंडिकेटर्स, व्हिच टूल्स बेसिकली? वेलकम नाउ टू यू. पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि we are like a team of 3. My elder brother, he's about 8 years older to me. He was the one who got me interested in the stock market in the first place. तो हमने एक तरह से काम डिवाइड किया हुआ है. सो नंबर क्रंचिंग जो है वो करते हैं, और जो रिसर्च वर्क है,
like reading the annual reports and reading the con calls, वो part All the मैं research handle work. करता हूँ. Got it. And I have this best friend, Nakul, his name is. He's on Twitter as well. Nakul 1984, I think, is his Twitter handle. He is now specialized in charts. क्योंकि हम पहले टेक्निकल एनालिसिस इकट्ठे करते थे, मैंने अब अपने आप को थोड़ा टुवर्ड्स रिसर्च कर लिया है. ही इज एन एक्टिव ट्रेडर एज वेल एज एन इन्वेस्टर. तो हम तीनों की जो शॉर्ट लिस्टिंग की टेक्निकल्स है वो ज्यादा एक्सपर्टीज उसकी है और वो हैंडल करता है. सो दिस इज हाउ वी वर्क एज अ टीम एंड वी आर डूइंग इट. जहां तक शॉर्ट लिस्टिंग का सवाल है, वी यूज अ टॉप डाउन अप्रोच. सबसे पहले तो हमारे एक व्हाट्सएप की डीपी ये लगा रखी है कि कौन से सेक्टर्स हमारी नजर में ऐसे हैं जो एज एन इंडस्ट्री ही बहुत ज्यादा तेज ग्रो कर रहे हैं. So like, if you talk of the SaaS industry, As industry. the CPaaS industry, diagnostic industries in itself is growing at a CAGR of 17%. So it is obvious कि जो largest company है या जो सबसे efficient है वो उससे तेजी बढ़ेगी. So we own Lalpath Labs and I feel it has a massive runway ahead of it. In the same way, API and CDMOs, they have a decadal opportunity in front of them. और उस industry की growth जो है, that is north of 13 to 15%. So again, the efficient players will move faster than the industry average. So this is the first criteria. सबसे पहले हम क्या करते हैं? We choose the sectors we want to be invested in. Now second comes the number crunching part where my elder brother Sudeep, he handles it. So those are the basic जो I think सभी देखते हैं, ROCE and ROE above 18%, debt to equity below 1, and the normal metrics जो I think every investor looks for, कि at least 15 to 20% revenue growth हमें दिखना चाहिए. Operating margins, if they are north of 25%, that is very good. But there are businesses जहाँ operating margins अगर suppressed भी हैं, but if we see a trigger कि वो expand होने वाले हैं, we go ahead and invest in. Then the CAGR of the cash flow, that is very important. I guess वो चीज बहुत important है देखनी कि जितना profit pat है वो क्या convert हो रहा है. And one very important metric जो काफी लोग I think से miss out कर जाते हैं, and that is debtor days, the working capital cycle. अब we own Jubilant Foodworks. अब लोगों का कहना है कि उसकी वैल्यूएशन बहुत हाई है, बट पर्सनली इफ यू आस्क मी, इतना हाई ग्रोइंग स्टॉक एट सच हाई मार्जिन्स इस ROCE पे विद जस्ट 0 to 2 डेटर डेज मिलना काफी मुश्किल होता है. सो आई गेस ऐसे स्टॉक्स की वैल्यूएशन आपको हमेशा हाई ही मिलेगी. एंड वी एंटर्ड द स्टॉक इन August 2019 एंड तब से इसकी वैल्यूएशन हाई ही चल रही है, बट वी हैव मेड good money in it, and I plan to for the next 10 years. So this is the fundamental side of it. And when coming to the technicals में वो ठीक है, सबसे पहले तो अगर किसी को टेक्निकल चार्ट्स के बारे में सीखना हो, the first thing is to learn about candlestick analysis. That is the first thing, how a candle is basically formed, or what's a higher lower color of the candle. If you learn that, that is like the ABC of technical charting, right? So uske baad se we try and spot those stocks which were trending. Okay, hum weekly charts dekhte, we don't go for daily charts because we are long term investors, either weekly or monthly charts, right? So one candle represents 1 week or one candle represents 1 month. We try and spot those charts jahan pe ek range bani ho. The stock is good. We have shortlisted it. It has, the secular trend is up and the stock is not correcting price-wise, but it is correcting time-wise. Now, what does time-wise correction mean? Agar aap Naveen Fluorine ka chart dekhen, like if you see the 10-year chart of Naveen Fluorine, it trended well from 2011 to 2017. It made money for the shareholder, right? और 2017 से लेके 2019 तक इट वाज रेंज बाउंड. मतलब मान लीजिए 100 से 800 आया स्टॉक प्राइस, एंड देन फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years इट वाज रेंज बाउंड फ्रॉम 800 टू अबाउट से अपर बैंड 800 टू लोअर बैंड
650 I think was the lower band. For 2 years that was in a rectangular range. And that is the point you have to look for कि क्या business में कुछ change आया है, क्या business का कुछ मतलब usually it corresponds to a period where business is going through a headwinds या फिर economy is going through a headwinds. कि the stock market itself is in a bear run, which it was at that time. Of 2019 may we noticed that it is breaking out of that pattern, right? So Naveen Fluorine on 13th August 2019 was my first purchase. That was the day I started serious investing. I got it at a price of 725, and today I think it's around 4,000. That's my biggest allocation in the my portfolio, and it has been the best run. I mean, personally for me, मेरे लिए best holding ये रही है. और उसके बाद हमने यही चीज we started this as a pilot project just to see. हमने एक method बनाया, we call it BNMA averages, me and my friend. Tried to backtest it, it worked. तो हमें लगा कि ये कुछ ऐसा है जिसे हमें ट्राई करके देखना चाहिए प्रैक्टिकली, क्योंकि अभी तक तो सब थियोरेटिकल था. So in August 2019, we sat down, the three of us, my brother and my best friend. We shortlisted stocks और हमने उनमें as a pilot basis 4 of them we shortlisted कि चलो start करके देखते हैं. We'll work for 1 year, we'll work for 2 years. If this works for us, we'll carry it forward. क्योंकि तब तक 2015 तक हम सिर्फ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स ही थे. 2019 was the time we started, we thought about serious investing. So August 2019 was the exact date. We got 4 stocks exactly. So Dr. Lal Path Labs and Naveen Fluorine, Jubilant Foodworks and Just Dial. 4 stocks, right? अब उसके पहले आप सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे? उससे पहले हम सिर्फ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते थे. म्यूचुअल फंड में वी वर इन्वेस्टेड हेवीली. हमें ये काफी पहले पता लग गया था कि इक्विटी मार्केट्स में एक्सपोजर रखना जरूरी है इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए. डायरेक्ट स्टॉक्स हमने 2019 में स्टार्ट किए. तो in August 13th August, I remember the date because of a big turning point in my life. हमने उस दिन ये शुरू किया 4 stocks as a pilot basis. हमें कॉन्फिडेंस इस बात से आया कि in spite of market not being too bullish, our stocks were overperforming. They were doing better than the market, right? ये चीज से हमें बहुत कॉन्फिडेंस मिला. सेकंड, हमको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस इस चीज से मिला कि even in March, the COVID fall, 23rd March 2020, the market saw a low circuit. Even on that day, हमारे stocks profit में थे. So we actually concluded कि I mean 3 out of 4. Just Tell was the one which went wrong for us. 3 out of 4 were doing good. That day we decided कि हमने जो method अपने लिए बनाया है, it is working for us. Like it ऐसा नहीं है कि bear run है या bull run है तो इसलिए ये काम कर रहा है. But we thought कि I mean hang on, let's just see what happened. ये it is working for us. तो इसको बैठ के थोड़ा और fine tune करते हैं. And now let's just get serious about this. And so we did. And we started scaling up our investments after June 2020. इस पायलट प्रोजेक्ट को देख के कि ये सरवाइव कर गया एक क्रैश. जो इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क एक क्रैश सरवाइव कर जाए फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकली, जो हमने अपने लिए एक लेवल्स ढूंढ रखे थे कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस से नीचे स्टॉक प्राइस कभी नहीं आना चाहिए. इवन इन द कोविड फॉल, none of our stocks close below that. So that was a big confidence booster for us. हमें लगा कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है. So and that is how we scaled it up. And then we realized कि टेक्निकल साइड तो चलो हमने ब्रश अप कर ली है, फंडामेंटल साइड को थोड़ा और ब्रश अप करना है. And then thankfully phase 2 of our investing journey, I am really thankful, I'm really grateful to we consider him as our mentor, and that was Ishmael. SOIC. हमने उनके वीडियोस देखने हमने उनके वीडियोस देखने शुरू किए. एंड वी रियलाइज जो वो हमेशा बोलते हैं, हम सिर्फ स्क्रीनर पे कुछ नंबर्स देख के और इन्वेस्टिंग कर रहे हैं. बट आपको हर कंपनी को एक मूविंग फिल्म की तरह देखना है, नॉट एज अ स्टिल पिक्चर. एंड दैट वाज आई थिंक द रीजन वी वेंट रॉन्ग ऑन जस्ट टाइम, क्योंकि उसके नंबर्स तो बहुत अच्छे थे, बट देयर वाज नो ट्रिगर इन द बिजनेस. There's nothing inside the business that could take it forward. बाकी 3 में luckily I'd say luckily
the 3 businesses that we shortlisted, they had something in it. और SOIC के वीडियोस देखने के बाद, उनमें डीप डाइव करने के बाद भी मुझे उनमें कॉन्फिडेंस रहा, एंड आई स्टेड इन्वेस्टेड इन. We were just lucky. But had I known these techniques and these things in 2019, मैं शायद जस्ट डायल में इन्वेस्ट ना करता. So I had no idea कि research reports, con calls और annual reports में इतना treasure होता है. I had no idea. I mean, I'm really thankful to Mohit and SOIC Channel who have educated the retail investor in this regard. And again, especially to Sajal Kapoor sir, matlab, his insights into the CDMO industry are just, I mean, mind blowing. जिस तरह से वो चीजें प्रेजेंट करते हैं, और I had no idea कि CDMO would have such a multi-decadal run in front of us. But when I read more into it, when I've seen all his webinars, I have seen his interviews. मैंने उनका जो SOIC वेबिनार है 4 घंटे वाला, मैंने कम से कम 3 बार देखा है, and every time you find something new. Yes, exactly. और जब मैंने उसके बारे में और पढ़ा, CDMO के बारे में, the comparison is very right. कि CDMO might be at what the IT was in the 90s. ये सबसे cheap intellectual labor इंडिया के पास है. And we might just become the hub of this industry. Or China is not a very trustworthy partner. In CDMO industry, IP is a big thing. Intellectual property, trust is a big thing. The innovator has to have trust in whoever is outsourcing the work. And I don't think China is a trustworthy country. We've seen that time and again. I mean, Tesla has accused them of stealing their technology for their own EVs. All this debate about Huawei sending back data to their servers in different countries. So there has always been question marks on China's credibility. So I guess once number 1 is not working, what comes is number 2. Number 1, अगर आपके साथ issues हैं, तो number 2 फिर the next big thing the world has is India. Yeah, and they have everything. They have the cheaper scientists in terms of lower cost of wages. They have that intellect. They have that trust. So we have, it's like a tailor-made thing. कि CDMO शायद से बहुत ज़्यादा runway आ सकता है उसमें. I agree with Ishmohit and Sajal Kapoor sir. It's a very interesting thing happening in India. और सजल सर के जो फार्मा और केमिकल्स के ओवरऑल सेक्टर के जो इनसाइट्स होते हैं, वो भी बहुत ही हर बार कुछ नया नया मिलता है उनके ट्वीट्स में. Mind blowing, seriously. I mean, yeah, I have not come across anybody on Twitter or in my investing journey जिन्होंने इतनी deep insights दी हैं. And that is very good, very very good. ये I think जो seasoned investors हैं, उनका काम हम retail investors को educate करना, it's a very noble job. And hats off to him and to SOIC who are basically doing it for free. For no, they don't have anything, they're not getting anything out of it. But educating us, they're doing a very noble thing. Very people like you and me. Yeah. और सर आपने आपकी प्रोसेस के बारे में बताई, तो उनको एक समराइज कर देता हूँ मैं. तो पहले सर ओवरऑल फंडामेंटल्स देख के कंपनीज को स्क्रीन कर लेते हैं. उसके बाद उस कंपनी में एक बिजनेस उसका डीप डाइव कर लेते हैं कि कंपनी एग्जैक्टली बनाती क्या है, करती क्या है. The first step is sector, top down. हम सबसे पहले we have made a list of those sectors like QSR, like CDMO, like API, like CPaaS. हम उन्हीं सेक्टर्स में ही स्टॉक्स को शॉर्टलिस्ट करते हैं, हम उससे बाहर करनी चाहते हैं. तो उस सेक्टर को आप देखते हो कि वो कितना ग्रो कर रहा है, फिर उसमें जितने स्टॉक्स है उनमें से आप बेस्ट टॉप 3 सिलेक्ट करते हो. और फिर आपके खुद के प्रोसेस में उसे ढाल के देखते हो कि ये अभी टेक्निकल्स में कैसे दिख रहा है. Exactly. That is what we do. तो सर आप टेक्सटाइल के बिजनेस में भी हो और इन्वेस्टिंग में भी हो, तो आप टाइम दोनों को कैसे मैनेज कर सकते हो? So yeah, we have textile manufacturing in Amritsar, or I think investing is a full-time job,
बट थैंकफुली ये बहुत ज्यादा टाइम हमारा डिमांड नहीं करता. लाइक पर्सनली इफ यू आस्क मी, I would give 45 minutes to 1 hour every day of reading, basically just reading. जो आप करते हैं, वैल्यू पेकर के थ्रेड्स को पढ़ना, अपनी होल्डिंग्स के बारे में अगर कोई अपडेट्स है तो उनके बारे में पढ़ना, अच्छे यूट्यूब वीडियोस जो सीजन देखना। इन्वेस्टर्स के हैं, अगर हमारे स्टॉक्स के रिलेटेड हैं तो उनको देखना. And Sundays 1 to 2 hours. Then obviously after every quarter going through the con call, annual report हुई तो एक संडे निकाल के उसको पढ़ना. I don't think that takes a lot of time and that can be managed. ऐसा नहीं है कि वो करना बहुत मुश्किल है. हाँ, if you're doing active trading, जैसे the friend I told you about नकुल, वो active trading भी करता है. Okay, So he gives about 2 hours every day to the market. Then you have to got it. be glued to the screen, Hmm, right? correct. बट फॉर इन्वेस्टिंग आई गेस आपको बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. ऑफ कोर्स इट नीड्स टाइम, बट बहुत ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है. बट या देन अगेन, लाइक यू नो व्हाट दे से, जिस चीज का आपको पैशन है तो वो काम लगता ही नहीं है. Correct. Then it's just like reading stuff and watching videos of, believe it or not, I am an ardent fan of the OTTs, Netflix और Amazon Prime. कुछ एक साल से वो देखना तकरीबन बंद ही हो गया है. बिकॉज अब हम यूट्यूब वीडियोस ज्यादा देखते हैं. जो जो टाइम हमारा नेटफ्लिक्स लिया करता था, माय वाइफ इज स्टिल वाचिंग दैट. पहले हम इकट्ठे देखा करते थे, अब वो अकेले देख रही है और मैं यूट्यूब के वीडियोस और ये थिंग्स रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट ही देख रहे हैं हम. Yeah, that is how the passion grows, and in the words of Sajal sir, this is how knowledge compounds. हाँ, करेक्ट करेक्ट. मैंने भी नेटफ्लिक्स और ये सब देखना कब का बंद कर दिया. 2-3 साल पहले ही बंद कर दिया. अब सर्जन सर के और SOIC के वेबिनार देखते हैं. वही ज्यादा I एक know. मूवी की तरह ही होते हैं. वो मतलब एक स्टोरी की तरह ही होते हैं. मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग Exactly. भी होते हैं. और इसके अलावा if you get it right, you make money. So that करेक्ट is the biggest करेक्ट incentive. करेक्ट करेक्ट. And you know, there is no better feeling than when the story you have thought in the mind starts to unfold. ये चीज बहुत fulfilling और satisfying लगती है मुझे. Like I told you about RSEL Gear Tech. I'm really glad you made that video. I had there's a very interesting story behind it. हम जब इकट्ठे बैठे, हमने ऑटो एंक्स कभी नहीं देखे थे. So this is this was the only exception in our portfolio. हमने ऑटो एंक्स को कभी कंसिडर नहीं किया था, because in our minds we were clear कि ऑटो इंडस्ट्री शायद से डिस्टर्ब होने वाली है. सेमीकंडक्टर्स के लिए. EV is going to come. EV will eventually evolve into AVs. Correct. And the industry is going to disrupt itself. हमने सोच लिया था कि ऑटो रिलेटेड हम कोई स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे. And it was this arrogance, क्योंकि हमारे जब स्क्रीनर्स में RSEL Geartech का नाम बार बार आ रहा, it was this arrogance which led us to ignore RSEL Geartech at price 80. Like if I put in my filters, so fundamentally and the breakout had come at price 90. मतलब जो चीज हमने नवीन फ्लोरीन ने अप्लाई की, that breakout had come at price 90, right? RSEL Geartech में 90 वो breakout आ गया था, but we ignored it ये सोच के कि ये तो ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स है, ऑटोज आर सिक्लिकल और ऑटोज आर सिक्लिकल और ये इंडस्ट्री डिस्टर्ब होने वाली है, इसलिए हमने उसमें इन्वेस्ट नहीं किया. By I think when the price was around 430, हर स्क्रीनर में उसका नाम बार बार आता था. And then I read the annual report, then I read more about it. When they did their first con call, I was so impressed कि मुझे लगा, मैंने कन्विंस किया अपने भाई को भी और अपने फ्रेंड को भी कि let's give this a thought. मान लिया ये हमारे फ्रेमवर्क से या हमारे सेक्टर से बाहर है, but we can make an exception. Correct. And then we realized कि इस छोटे से माइक्रो कैप में कितने हिडन मोड्स हैं जो अभी तक शायद लोग देख नहीं पा रहे. Correct. Kubota was their first customer back in 2005. 2005. It was basically Kubota that coaxed them to go bigger, you know, to think big and go bigger in life. Kubota आज भी उनके साथ है. I realized one thing. Kubota Customer has बहुत sticky है. Very sticky. It takes time for build trust. It takes time for to get approvals. 3 साल का टाइम लगता है आपके पार्ट्स जो दिए हैं आपने उसको अप्रूव कराने में. And once you get the approval, then it's just, you know, the revenues are sort of fixed. Then there is not looking back, right?
जैसे आपने अपने वीडियो में कहा, दैट इज अ वेरी गुड पॉइंट कि KTM और BMW दोनों कॉम्पिटिटर्स हैं. हाँ, अगर वो दोनों एक ही आदमी एक ही वेंडर से काम कर रहे हैं, तो दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द प्रोडक्ट प्रिसिशन क्वालिटी ऑफ. ऑल्सो. हाँ हाँ. एग्जैक्टली, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स. सेकंड थिंग, क्यूबोटा तब से 2005 से they have stuck with RSEL Geartech. So they did a joint venture with Escorts, the tractor company in India. Now they would be the largest in the tractor segment all over the world. अब Escorts के vendors अपने थे, right? Kubota is a foreign company coming to India. Obviously they had their vendors. Now Kubota, there is a story doing rounds that Kubota books Escorts to replace the transmission vendor as RSEL. अब जॉइंट वेंचर जो नया होगा, उस कंपनी में भी जो सप्लाई है RSEL देगी. Now that again speaks volumes of the trust they have with their customers. One. Second, इसमें एक बहुत अच्छी बात भी आ जाती है. Since their clients are A class, उनकी ग्रोथ के साथ साथ RSEL अपने आप प्रॉक्सी ग्रो करेगा. And that is a very important thing to note. And if you see their clientage, it is top notch. It's top notch. BMW, Yes, Yamaha, it Mahindra, is top notch. अगर आपने last Kubota, call, अगर KTM. आपने, I mean, you name a big brand and Correct. it's there in their pocket. अगर आपने last call सुनी हो तो they named that जो 10-year contract था EV का, they named it now. It was BMW. Yeah. So the CE04 bike model, which Mr. Gushan Singh had mentioned, just watch the YouTube video. Now that scooter is outstanding. It is the most high-tech EV scooter made in the world right now. Very high on features. And to know a small fledgling Indian company supplying parts to that scooter, that in itself is a matter of pride. I mean, you would want to be associated with this company, leave alone investing in it. Correct. So yeah, so this was one company where हमने sectors नहीं देखा, but we made an exception. We liked it so much. Yeah, this was one exception. And the market cap is only 700 crore. It is fledgling. मुझे जय, I would repeat जो आप हमेशा कहते हैं कि आप हमेशा small and micro cap में काम करते हैं because that is where real wealth is made. Correct. You're right. Usually हमारा जो framework है, पहले हम अपने स्क्रीनर में मार्केट कैप डालते ही 1500 करोड़ के ऊपर की थी, क्योंकि हमें लगता था कि उसके नीचे की जो हमको स्टडी करना, उनको डीप डाइव करना थोड़ा मुश्किल है, जिसमें डिस्क्लोजर्स यूजुअली इतने अच्छे नहीं होते हैं. करेक्ट, इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती. बट नाउ वी हैव डन अवे विद दैट मार्केट कैप फिल्टर, और नाउ वी इवन लुक फॉर 300 to 600 crore market cap companies. You never know when they become big. करेक्ट. मेरा पहले क्राइटेरिया था 1000 करोड़ की कंपनी के ऊपर जाना स्क्रीनर में. बाद में वो रिप्लेस करके 100 कर दिया RSEL फाइंड करने के बाद. Yeah, this company is moving filters. Correct. For everybody. Correct. Yeah. That's it, sir. That's it. All questions from my side. Thank you for being on this podcast, sir. Thanks a lot. It was pleasure. Thank you for having me here. It was pleasure. The pleasure is all mine. I just hope कि ये continued रहे for many more संवाद आगे के लिए भी. And like I had promised you, मैं तारिक भाई से, साहिल शर्मा से, इश मोहित से और सज्जल सर से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि they do this with you. I want your YouTube channel to work. I am really I'm inspired by your YouTube channel. मुझे आपका एनालिसिस बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सर. थैंक यू सर. के सब ट्विटर हैंडल्स डिस्क्रिप्शन में, आप उनको जाके फॉलो कीजिए. ट्विटर पे ही पोस्ट अमेजिंग ट्वीट्स, राइट? ऑफ कोर्स, यस. तो यही था. और इस बाय द वे इस वीडियो में जो भी स्टॉक डिस्कस हुए वो रिकमेंडेशंस नहीं है. वो गिर गए तो हमें मत प्लीज डीएम कीजिएगा. Yeah, there are no recommendations. हाँ. और leave aside SEBI registered, we are just normal retail investors like everybody. And हमने जो भी डिस्कस किए, we are invested in them, so our views are obviously biased. Biased. और आप स्टडी करके ही कुछ भी डिसीजन लेना. Of course. स्टडी करने के लिए अर्थवृक्ष का YouTube चैनल है, SOIC का YouTube चैनल है. Those are the best sources I find for myself. आप भी यही कीजिए. नहीं, SOIC का देखिए, अर्थवृक्ष का तो ज्यादा नॉलेज नहीं मिलेगा. I will send a message to Ishmohit and I will request him to be on your संवाद. मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ आए. It will be very nice for you and for. Thank you for being on the podcast.